Hello, Assalamu alaikum, good evening. Welcome to the webinar that we have today. We're joined by a fantastic panel that we'll be introducing shortly. Those of you who are signing in, if you could use the chat box, there's a private chat box that you could see right on your right side of the screen. Just say hello, hi, so that we know that everybody is here. Today's topic is very exciting. I don't know about all of you, but I'm super excited about what we're going to discuss. It's all about collaboration and how to use collaboration to take your businesses forward. We're told that a lot of fellows are joining us today, but those of you who are also streaming this live on our other social media channels, please feel free to put in your questions. We'll be taking a lot of your questions as well. We have approximately an hour, ladies and gentlemen, so let's try to make it as fruitful as possible and as engaging as possible. My name is Noorulain, and I'm the CEO of MindWorks International. And I have gone through the fellowship journey, the DICE journey for the last year, and I've worked with the team very closely. It gives me immense honor. We have a fantastic panel. I know a lot of you would be very excited to hear from them and see what they have to share with us around collaboration and competition. So let's just start introducing everybody. So we have with us our very own Shiri Naqvi. She's a trustee of School of Leadership Foundation. Shiri Naqvi, thank you so much for being here. If you could unmute so that I can hear you, Shiri Naqvi, so that I know that my voice is coming across. Right. We're also joined with our next panelist, who's Faisal Sherjan. He's the director at the National Incubation Center, Lahore. Faisal Saab, thank you so much for taking out the time and being here as our panelist. There you go. I see you. If you could wave, Faisal Saab. Thank you. Thank you. Incidentally, I have left LUMS. I will be joining another university. So just consider me loose pebble right now. All right, fantastic. So it'll be great to hear more about collaboration from you, Faisal Saab. Thank you so much for taking out the time. We have our own digital guru. This guy is the first name that comes to our mind whenever we're thinking about anything technology. Saad Hamid, the community manager at Google. Saad, thank you so much for taking out the time and speaking to us. I know you do this quite a lot, but it's always a pleasure to hear from you and see what new is all happening in the world and all how you're working very closely with startups. I know, so it'll be great to hear from you, share your experience and how the journey has been like for you and the other startups that you're interacting with. Thank you, Noor, so much for inviting, and thank you to DICE, and here to be an amazing company of folks such as Faisal, Shahida, Shiri, yourself. It's going to be exciting, hopefully. Yeah. Super, great. We're also joined with Umair Jaliawala. So Umair, Ajaye, the CEO of Torque. There we go. Thank you. Looking very sharp in the purple kurta, I must say. It's going around with the aesthetics at the back as well. So thank you so much for taking out the time. We're also joined with Shahida Saleem of Impact Network. So Shahida, how are you? And there we go. We have the camera working now. I'm fine. I've just survived a hurricane, so if I look a little weird, that's why. Yes, but we're so glad that you could make it amidst the circumstances that are there. Thank you so much for taking out the time. And one final call. We're waiting for Shiri Appa to also, her screen to also pop up so that we have the complete forum. There we go. Assalamu alaikum, Shiri Appa. How are you? Wa alaikum salam. Thank you, Noorulain. Great. So thank you all, five of you. We have people who are joining in and we can see their comments as well. Thank you so much. Before we kick off, feel free, ladies and gentlemen, जो भी हमें join कर रहा है, आपके जो भी सवालात हैं, आप प्लीज chat box में डालते जाएं. We'll try to keep this bilingual, ताकि जहाँ से भी हमारे पास सवाल आ रहे हैं, we can cater to them.
All right. So सवाल जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट था और क्योंकि हम न्यू बिजनेसेस के बारे में माइक्रो बिजनेसेस के बारे में और स्मॉल बिजनेसेस के बारे में बात कर रहे हैं how important it is to collaborate. Shiriapa, I'll put you on the spotlight. And I would really want your opinion on this. Why collaborate? अच्छे भले तो हम अकेले जा रहे होते हैं अपने काम करने करते रहे. Because competition is too primitive, it's too archaic. It is very easy to compete with someone and put them behind and leave them behind. It's more difficult to pool in your resources with somebody else and move forward. Also, because you can't have all the expertise, you can't be a specialist at everything. You have to collaborate with everybody else who has those who complement you and then move on towards your common goals. Yeah, absolutely. और हमें सबसे ज़्यादा डर यही रहता है. I don't know if it's a societal thing. I'll let Umair comment on it more. But Umair, is it a societal thing कि हमें डर लगता है कि हम अपने ideas share ना करें किसी से क्या पता चोरी हो जाए? मैंने सुना तो बहुत है कि आइडियाज चोरी हो जाते हैं बट आई हैव नेवर इन माय startups experience of meeting startups and investors have ever seen an idea being stolen without the man who could conceive it or the person who could conceive it and really do something with it. Ideas are very cheap, lekin yes, we are brought up in a very competitive environment. Grading system school के अंदर, so collaborative हमारी पढ़ाई नहीं होती, सारा का सारा time यूनिवर्सिटी लेवल पे आके कहीं मैंने ग्रुप वर्क really kiya tha, other than of course extracurricular. Similarly within siblings, amongst each other we are comparing, and so it's always about कि किसी की घट होगी तो मेरी अच्छी होगी, कोई नीचे जाएगा तो मैं ऊपर आऊंगा. स्पोर्ट भी हमारा सारा का सारा मजेदार बात है कि ट्रेडिशनली जो डिजाइंड है उसमें कोई ना कोई एंड में पिसता है. So that's how good sport, that's what we call a good match. So it's difficult to then take it away when you're doing a business. It's difficult to take the marketing battle away and say कि as a business हम दोनों एक industry के अंदर हैं, एक मकसद लिए हुए हैं. इसी तरीके से और businesses मौजूद हैं, and to see them as partners is not a natural, I would say, it doesn't come to you naturally. You have to consciously think of your partners and collaborators. Yeah, no, and absolutely, and rightly put. So भाई यूनिवर्सिटी से पहले तो हमने कभी सीखा ही नहीं था कि अपना लंच किसी से शेयर करना है. रिमेम्बर हमें तो बचपन से ये बताया बेटा ये तुम्हारा लंच है, तो जब स्कूल जाओ तो अपना लंच खुद खाना. So imagine how the psyche when we start off thinking about, and then when we think when we put things into perspective, how important collaboration becomes. फैजल साहब, you deal with a lot of startups, और ये जो अभी पहाड़ सा एक मसला हम सब पे पूरी दुनिया पे पड़ा जो किसी ने भी फोर्स ही नहीं किया हुआ था. कोई नजूमी बता देता कि ये आना था तो हम शायद उसी की प्लानिंग पहले करना शुरू कर देते. बट हाउ have you seen the past 6 months the whole spectrum has changed for businesses, for education, for technology, for pretty much everything in the way we operate. Why do you think it's more important now to collaborate than it was before? Okay, first and foremost, the concept of collaborating or competing, I think it depends entirely on the kind of business you're in and the kind of environment you're in, right? So it depends on what the objectives of your business are, जो आप करना चाह रहे हैं उसका मकसद क्या है और उसके मकासद कैसे पूरे होंगे. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो आपके मकासद हैं वो कैसे पूरे होंगे. उसमें कोलैबोरेशन भी आती है, कंपटीशन भी आती है, डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट इंटेंसिटी की कंपटीशन और कोलैबोरेशन भी आती है. कोविड ने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रिवील भी की हैं, वो एक्सपोज भी की हैं और वो फोर्स भी की हैं. अब हम कहते हैं कि न्यू नॉर्मल, right? So what is the new normal? New normal is a low touch economy, a low touch social behavior, right? So countries which had low or no touch like Vietnam, Cambodia, right? They've had lower incidence of transmission also. So transmission was very slow there because they never shake hands, they never hug, right? So that was the normal for them, that they never shook hands, they never hugged, and because of that the transmission was
slower than it was in our kind of societies where we are given to hugging, where if we don't shake hands, it is offensive. ठीक है ना, ये सारी चीजें उसमें है. हाँ, अब तो वो नया में आके कह दिया कि ये भी कर रहे हैं तो वो ग्रीटिंग हो जाती है. तो ये सारी चीजें हैं. बट इस पीरियड में डेफिनेटली देयर हैज बीन अ नीड फॉर पीपल टू रीथिंक कि वो चीजें कैसे करते हैं, whether it is a social interaction or whether it is running a business or working with other people. So collaboration within the team bhi hoti hai, collaboration with other people who have similar objectives unke साथ भी होती है, competition भी होता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती है. But during this COVID period there have been very good instances. If we go dial back to March, तो March में one of the startup Rada Technologies that was making 3D printers, right? He was approached or he got in touch with somebody from Australia who was 3D printing valves that could increase the capacity of ventilators. So in about 6 weeks' time, he had about almost 30 people from across Pakistan printing those same valves. So he was sharing the file. The Australian doctor shared the file with him, the design file. So he printed valves. Then he shared those design files with other people who had 3D printers. They started to print those. And soon across Pakistan, there were 3D printers working to print those valves. I think that is one of the better examples of collaboration that I've seen. They were also able to go to hospitals where the medical engineering staff there helped them test those valves. So that is another example of collaboration, right? So it did happen. Same thing happened with what the PPEs, right? So protective suits. So a lot of people came together, right, and worked out कि जी कितनी आसानी से fabric कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना, stitching कौन करेगा, price क्या होगी, and because there was a lot of collaboration, so Pakistan was in a position in about another 4 to 6 weeks to start exporting PPEs, right? So everybody came. So everybody was doing the same thing. They should have been competing, but they weren't competing. They were collaborating. Right? ये भी एक बहुत अच्छा example था of how people collaborated. And the ultimate was the ventilators. So a lot of people came together to design ventilators. They were doing it individually, then somebody got them together. I mean, I was part of that group that was talking about it, that was looking at different designs, testing them, discarding, adopting. Eventually, now we're in a position to not only make ventilators, right, which is pretty sophisticated in terms of its technology and engineering. We're also now in a position to export them. So these are some of the good examples of people who would normally compete, who collaborated during this period and created markets for products. Yeah. No, no, absolutely, absolutely. And we saw a lot of quick adapters, and we saw a lot of first movers who were grabbing the opportunity, as it came, and they were able to turn around, products and services very quickly. Saad, let me bring this to your point, because you work essentially at the innovation and the technology hub of things. Yeah. How what is your perspective as to how important collaboration is, and also just touch base upon in your experiences when you saw that there were doctors of, let's say, adoption of technology, and now they have gotten on the bandwagon. How is their experience now? Are they collaborating with other technology partners, or are they just trying to reinvent things within themselves? Sure. Thank you for that question. So I think from a tech perspective, if you look at the history, if you look at it right now, even in the world, there has never been an either or situation. So मतलब ये नहीं है कि कभी competition कर रहे हैं तो collaborate नहीं करेंगे, या collaborate कर रहे हैं तो compete नहीं करेंगे. It's always been depending on what the objective is, या what the shareholders are looking for. जो हिस्ट्री में थोड़ा सा मैंने टेक के बारे में पढ़ा है, सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल 1997, a very rare company that Apple would have not expected would invest in it, invested $150
million in it. That company was Microsoft. A lot of people say Apple exists right now because of Microsoft. That stake turned out to be a $2.7 billion stake for for Bill Gates now. So काफी लोग, when you go up read up on it, it's very interesting. So Microsoft saved Apple and it's a similar story between the Batman and वो जो Joker वाली story है कि Batman would not have a nemesis if he would not have Joker. So you would not feel that urge to compete if you would not have that person, who would compete with you. Because at the end of the day, your competition is kind of pushing you to do things more innovatively. That's why the tech industry is very, very fast and very, very innovative, because they compete, but then they collaborate. Then they compete again, then they collaborate. और ये हिस्ट्री में भी आप जाके देख लें. आई वाज एक्चुअली अभी मैं स्क्रॉल करके फीड में देख रहा हूँ. देयर इज जस्ट a collaboration that happened between IBM and Adobe. There are numerous collaborations that you would look at. You would look at companies जिन्होंने लिखा होगा कि जी अच्छा हम एक दूसरे. Look at Uber and Careem. It's crazy when you think of it. अच्छा इसको भी छोड़े, मैं आपको एक और बताता हूँ. एक company that I was affiliated with, Elance, which used to be very big in freelancing. They merged with a company called Upwork, and I was at that time at Elance. So मुझे पता है कि how like shock सारों को लगा था, because those companies were competing, and then they collaborate and they form a company called Upwork, which is now the biggest freelancing platform in the world. So in my perspective on this is based on what has happened in the market so far, is that companies compete, companies collaborate depending on what their objectives are. पाकिस्तान में आप टेलकोस को देखें, अब टेलकोस कम ही रह गई हैं, बिकॉज पहले जो थोड़ी बहुत थी उनको या एक्वायर कर लिया गया या उनको मर्ज कर लिया गया. वारिद एंड मोबिलिंग मर्जर हैपेंड, सो इट्स जस्ट मोबिलिंग नाउ, जैज नाउ. एंड पाकिस्तान में ओवरऑल भी अगर आप जाके देखें टेक में, यू टॉक अबाउट टेक, यू विल सी. इसकी मैं एक समरी ये दे सकता हूँ कि अर्ली स्टेज कंपनीज आपको ज्यादा कोलैबोरेट करते हुए नजर आती हैं, बिकॉज दे लैक रिसोर्सेज, दे लैक बक्स, दे लैक मनी. तो वो चीज जो खुद नहीं कर सकते, दे गेट अ लॉट ऑफ मैन पावर बाय कोलैबोरेटिंग. And then maybe at some point they compete, then they come back when they become big to collaborate again. We see this cycle going on again and again. I've never seen this cycle end. कि एक कंपनी जो एंड पे जाके कहे, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी भी होगी, वो कभी ये नहीं कहेगी कि we are going to do this on our own. In some pockets it will still collaborate in smaller partnerships, but that's what I've seen so far. Yeah. No, and rightly pointed out कि early stage वाले को तो ज़्यादा ज़रूरत है ना कि वो kick off करे, jump off करे from, because that person is actually looking to take the leap. How do we take the leap? और वहाँ पे वो आता है कि ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है ना, वही जो हम बात कर रहे हैं, और उसी झिझक को हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं इस वेबिनार से. Okay, a lot of the fellows who are joining us, if you could also comment and let us know via your chat box your individual particular concepts. हमने वो 2+2 11 वाला कॉन्सेप्ट इनको बताना है और उस झिझक से बाहर निकलना है कि भाई ठीक है, हम भी ये कर रहे हैं, तुम भी ये कर लो, आओ जरा आके जरा ज्यादा लोगों को, ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें. Shahida, is that a practice where you are in the world as well, or या सिर्फ ये हमारा ही challenge है? So thank you, Nurlan, for the question. I think अभी जितनी बातें सबने की हैं उसमें एक common word है, and that is objective. और जब हम स्टार्टअप होते हैं, हम नया काम शुरू करते हैं या हम पुराना काम भी करते हैं, तो बात ये होती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. जब हम कोलैबोरेशन करते हैं, कोलैबोरेशन कहना बहुत आसान है, करना जरा मुश्किल है. And I think I'm a firm believer in the devil is in the details. I don't think there is anybody who says I don't want to collaborate. Everybody always says, हाँ, I want to collaborate. Of course, I want to collaborate. लेकिन जब collaboration शुरू होती है, फिर मसले आते हैं. And that is actually where the problems come. And so the devil is in the details. And I want to throw out a couple of things to maybe help with. There are some things when we collaborate or form partnerships to that. Number one is trust. You cannot have a success partnership without trust. And that means that you must spell everything out very clearly from the beginning, in writing. In writing. Zubani kalami nahi, but in writing.
Number two, there has to be a common objective. बहुत सारी दफा ये होता है, and we see it. We at Beck Foundation we have many different programs. Impact Network is one of them. एक मजला शुरू हो जाता है, 200 बंदे इकट्ठे हो गए और आप उनसे पूछे आप क्यों इकट्ठे हुए, and everybody's kind of scratching their heads. इकट्ठे हो गए, ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ये है, हमने एक इवेंट करनी थी। ओ भाई, क्यों इवेंट करनी थी? ये हम क्यों बात करें? Nobody really knows. So clarity and the commonality of the objective is important, right? ये हम क्यों, ये collaboration हम क्यों कर रहे हैं? आज की दुनिया में if you look at companies, अभी साद ने mention कि Apple, Microsoft, तो इतने जायंट्स हैं, एक छोटी सी कंपनी नन्ही मुन्नी क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी. If we want to compete in the global world, right? पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया है, अगर वहां आपको compete करना है, बड़ी कंपनीज बननी है, आप अकेले नहीं कर सकते हैं. You must form larger companies. You must form larger groups. You must form consensus. एक दूसरे से सोच मिला के एक सोच में आना जरूरी हो गया है, और तब जाके हम दुनिया में compete कर सकते हैं. तो I think ये भी एक बहुत जरूरी है कि हम compete जब बात करते हैं, हम कहाँ compete करें? हम आपस में ही compete करते रहेंगे, फिर तो हम कहीं के नहीं रहें. Right? So I think the question is not, do we need to collaborate? Of course we need to collaborate. And the question is, how do we collaborate? How do we collaborate? So that's, I'll end here for now. Great, no, fantastic, because exactly वही बात जो हम करना चाह रहे थे कि a lot of you talking about common objectives होने चाहिए, और फैसल साहब ने कहा था कि भाई कोलैबोरेशन इंटरनल भी है और फिर एक्सटर्नल भी है. श्रेया का एक स्टार्टअप, because you have founded so many of them, you have taken businesses from an idea and then you've seen it climb up the ladder. वो झिझक कैसे निकाले, वो खौफ अंदर से कैसे निकले एक ओनर का, एक एंटरप्रेन्योर का, जो अपने बेबी की तरह उसको प्रोटेक्ट कर रहा है? बेटा वो खौफ है क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? मेरा नहीं ख्याल कि एनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर खौफ होता है. वो एंटरप्रेन्योर होता ही वो है जो रिस्क ले सकता है, तो वो पहले ही अंदर आता है. उसको सिर्फ कोलैबोरेशन का जो फलसफा है, द फिलॉसफी ऑफ कोलैबोरेशन, जैसे आप सब ने कहा, पढ़ाई नहीं गई, उसको समझ नहीं आती. हम चाहते हैं अपनी फैमिली में ट्रस्ट, बड़ी अच्छी बात की जी, ट्रस्ट. फैमिलीज में बताया जाता है कि जी उसको ट्रस्ट ना करो, उसको हमें बचपन से ही इस तरह किया जा रहा है. रबील भी यही कह रहे हैं कि हाउ डू वी शिफ्ट फ्रॉम दैट. देखिए कोलैबोरेशन का जो फलसफा है, मुझे स्टीवन कवी की भी बात याद आती है कि मरहूम की, अगर आप compete कर रहे हैं तो दैट इज ए विन लूज सिचुएशन. मैं जीतूं दूसरा हारे, मुझे दूसरे की परवाह नहीं. और वो भी गलत नहीं है. जब आपका कोई मार्केट शेयर ले रहा हो, जब आपके घर चोर आ जाएं, तो आप कोलैबोरेट नहीं करेंगे चोर के साथ, आप अपनी जान बचाएंगे उस वक्त. ठीक है. जब एक और स्टांस आता है कि जी ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, लूज लूज, राइट, वो भी होता है कि बच्चों तूने आगे नहीं जाना तो मैं भी इसीलिए नहीं जाऊंगी. देन देयर कम्स अनदर है कि मेरी खैर है आप जीत जाएं. लूज विन माइंडसेट आता है विच इज अकोमोडेटिंग. उसमें भी कुछ होते हैं पीछे रह जाते हैं, इट्स ओके विद देम, बट दैट इज ऑल्सो राइट इन अ सर्टन वे. सिचुएशनली वो भी करेक्ट होता है. अगर मैं अपनी दोस्त के साथ बहस कर रही हूँ और मैं गलत हूं, मैं क्यों लगी हुई हूँ भाई, मैं दे दूं, मैं हार मान लूं. ठीक. फिर दरमियान का नुक्ता आता है कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज है मुखमुखा कर लेना, अद्धा अद्धा कर लो जी, 50-50 कर लो. एक जमाने में मैनेजमेंट में कॉम्प्रोमाइज बड़ा अच्छा समझा जाता था, लेकिन एज द ह्यूमन थिंकिंग हैज इवॉल्व्ड, द मैनेजमेंट साइंस हैज इवॉल्व्ड, कॉम्प्रोमाइज को अब वो उतना नहीं समझा जाता, बिकॉज
उसके अंदर रिजेंटमेंट रह जाती है, उसके अंदर काश रह जाती है, काश हमने और बेहतर किया होता। क्योंकि जब आप अपना 50% छोड़ते हैं तो कहते हैं काश मेरी पूरी बात मान ली होती। तो विन विन जो कोलैबोरेशन है वो कायनात का तरीका है, दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। सूरज जब निकलता है वो रब्बुल आलमीन के लिए निकलता है, रब्बुल मुस्लिमीन के लिए नहीं निकलता, वो सब के लिए निकलता है। ये हवा जो है, ये चूंटी भी इसमें सांस लेती है, इसमें बादशाह भी सांस लेता है, ये सब के लिए निकलती है। ये विन विन है, इट्स कोलैबोरेटिव। सो एज लॉन्ग एज यू फॉलो द लॉज ऑफ नेचर, लेकिन इसको समझना फलसफा ये है, बिल्कुल अभी शाहिदा ने दुरुस्त फरमाया कि कंपटीशन इज ए लोअर लेवल थिंकिंग, इट इज आवर प्रिमिटिव ब्रेन थिंकिंग। हमारा एनिमल जानवर जो होता है, वो एक कुत्ता भौंकता है तो दूसरा उसको आके प्यार नहीं करता, वो भी भौंकता है साथ। सो इट्स अ लोअर लेवल थिंकिंग। कोलैबोरेशन इज अ मच हायर फॉर्म ऑफ प्रीफ्रंटल थिंकिंग, या अशरफुल मखलूकात वाली थिंकिंग है कि मैंने अकेले नहीं जाना, अकेले ना जाना, बल्कि सबको साथ लेके चलना है, राइट? और उसके लिए हमने अपनी पुरानी सोच छोड़नी होती है। सबसे मुश्किल बात, आप अगर पढ़ें डैनियल खानमन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, तो वो कहते हैं कि सिस्टम 1 इज लोअर लेवल थिंकिंग, इट्स द अनकॉन्शियस थिंकिंग, जबकि कोलैबोरेशन के लिए सिस्टम 2 थिंकिंग चाहिए होती है, और वो बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। फिर हम उससे गुरेज करके आसान तरीके निकाल लेते हैं। And that's why one has to teach our students, our children at home, all of them, collaboration is a much higher philosophy. Thank you. Yeah, beautiful. No, and I completely agree with you. As a starter myself, हम यही बात करते हैं ना कि and in a lot of our discussions with the fellows as well, हमने इनको एक concept explain किया था कि एक बड़ी मछली और आप एक छोटी मछली। अब आपने ये सरवाइव करना है कि अगर आपने एक ही पॉन्ड में रहना है एक बड़ी मछली के साथ, तो आप तो छोटी मछली हो। आपको कोई ना कोई तरीका ऐसे निकालना पड़ेगा कि आप उस बड़ी मछली के साथ लगोगे, पैरासाइट फिश बनोगे, तो वो भी साथ स्विम करती रहेगी। तो बड़ी मछली ने तो मुंह एक बड़ा सा खोलना है और ऐसे करके आपको खा लेना है, और आप भी बीच में जाएंगे। There are questions also coming in, and this is a very nice question. I think besides collaboration results in slow decision making and less flexibility. Jameel, yes, एक चीज जो एक और इससे पहले भी सवाल था जो सनाउल्लाह पूछ रहे थे कि भाई जब मैं बहुत ही छोटा सा स्टार्टअप होता हूँ, एग्जैक्टली इज it's really hard to collaborate as well as attract। और ये बहुत सारे आप उमैर हंस रहे बिकॉज उमैर ने ये बहुत सारे स्टार्टअप्स के से ये सवाल आया हुआ है इनकी तरफ कि भाई मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं कहाँ से जाऊँ, मैं इन्वेस्टर को कहाँ से पकड़ूँ, मैं किसी स्पॉन्सरशिप ले दे किसी बड़ी कंपनी के पास कैसे जाऊँ। उमैर, आई वांट यू टू आंसर दिस बिकॉज दिस इज वेरी वेरी पर्टिनेंट कि भाई मैं अपने आप को प्रेजेंट कैसे करूं, मैं जाके अपनी कहानी कैसे सुनाऊं। बिल्कुल, मैंने हसीने चढ़ा ली हैं और मुझे शीरीन ने सिखाया कि अगर आप हक बात कर रहे हैं, ढंग से बात कर रहे हैं, तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं। अगर आपको बात करने का सलीका आता है तो आप कुछ भी कह सकते हैं। हम सब के अंदर वैशी है, उसको टेम करके जब हम अपनी अशरफ साइड से विच इज़ आवर गुड साइड, विच इज़ द साइड दैट वी आर, जब हम अपने रिलैक्स मोड में अपनी खुद ही अपनी अवेयरनेस से बात करते हैं, तो मेरा नज़रिया है कि उसमें खुदा बोलता है, उसमें हम अपने आप से कलाम होते हैं। और जितनी वो अवेयरनेस बढ़े, जितनी उस वॉइस को हम डिग्निटी देते जाएं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक दैट लीड्स अस टू द आइडियाज दैट वी हैव जस्ट हर्ड, हमें प्रिमिटिव से बहुत आगे तक ले जाता है। अब मैं अपने ज़ाती तजुर्बे से आपको बताऊंगा कि 2005 में मैं फ़ोन उठाता था, मुझे कॉल करना नहीं आती थी, अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती थी, अंग्रेज़ी में लिखता सही था लेकिन बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं था, और इदारों से कभी मुलाकात नहीं की थी। सो इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ उतर जाना है मैदान में, गौता लगा के सीखने वाली चीज़ है। कॉन्फिडेंस बनाएं, 20 लोगों को कॉल करेंगे तो 19 बेइज्जतियां कराएंगे, 20वीं पे कामयाबी मिलेगी। आप कौन हैं? आप छोटे से हैं, आपकी क्या लोगों के इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, सालों के कारोबार हैं, करोड़ों की चीज़ें फंसी हुई हैं, किसी का कंटेनर फंसा हुआ है, किसी की
यू नो पीपल हैव, और इसमें एक स्टार्टअप जब आके अब मैंने आपको ईमेल भेजी, मैं तो कॉल करता हूँ, और पूछें तो क्या कि एक लिंक्डइन पे ईमेल भेजी थी, मतलब आप, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल आर रियली बिजी and they not getting back or they not responding just means that you need to up your game, you need to better your pitch, you need to refine the offer. So every time, and it is going to happen, जैसे मैंने कहा ना, 20 को आप समझें कि आपने 20 पाकिस्तान की टॉप शख्सियात को पहुंचना है नूरुल ने, आपको कोई नहीं जानता, ठीक है, आपने 20 तक पहुंचना है, आप 19 पे बेइज्जती करा लें, 20वीं आपको यस मिल जाएगी, ये मेरा ईमान है, that's how it's designed it. And just make sure that you're not failing the same way. That's what startups do, right? They don't fail the same way, they learn from their failures. In that, collaborate, what we are talking about today. Don't think you are alone in this, okay? 6 degrees of separation ने बताया था कई सालों पहले कि आप 6 बंदों दूर हैं, ओबामा से उमैर सिर्फ 6 लोगों तक बीच में हैं, आज वो 0 degrees हो गया है. I can talk to anyone. I can communicate to anyone. The question is, do I have a story? Do I have a message? It's like that. वो जो एक शायरी थी ना कि the stage is set, सब तैयार है, but what's your message gonna be? तुम्हारा पैगाम है क्या? तुम इस फिक्र में हो कि तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें इस फिक्र में डालना चाहता हूँ कि तुम्हारा पैगाम क्या है, वो निखर जाए, उसको बताने का अंदाज बेहतर हो जाए. I'm sure the world gets back. I have personally witnessed it in Pakistan. Everybody, 2005 में मैंने 150 इंटरनेशनल स्पीकर्स को लिखा था, मैं उस वक्त 18 साल का था. वो 150 में से कोई 100 के जवाब आए होंगे, उस 100 में से कोई 20 पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो गए थे, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस जरूर दिया था शीरी ने कि तुम लिख सकते हो, and you can reach out, and that is it. And I do believe that Pakistani young people are pretty smart. थोड़ा सा अपने आप को inferior देखते हैं, बेहतर अंग्रेजी को, बेहतर कपड़े को, ब्रांड को, किसी की थोड़ी सी शिबैंग देख के जो है ना, बड़े बड़े जो है ना यूं फिसल जाते हैं बेचारे. तो ये ना करें. यस, आपका मर्तबा इन चीजों से नहीं डिटरमिन होता. थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू. Yeah, no, rightly said. And I think, Umair, one point that I picked from what you were saying is कि collaboration के लिए तो और ये 30 second story, 15 second story अच्छी होनी, crisp होनी, practice होनी किसी के सामने खड़े होके कि भाई मेरी कहानी क्या है, वो pitch perfect की जो हम बात करते हैं. कोलैबोरेशन में जहां आप अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, तब भी आपकी अपनी कहानी इतनी मजबूत हो कि अगला वाकई उससे अट्रैक्ट हो. I want to convert this for the next 2 minutes into an expert advice session. And I want, because all 5 of you, I know that you deal with a lot of startups. I know you deal with a lot of youth struggling वाले भी, थोड़े से successful जो कि अब scale up पे जाने वाले हैं. I want to know from all 5 of you, आपके पास अगर कोई घबराता हुआ बच्चा मेरी तरह का आए और फैसल साहब मैं आपके पास आई हूँ और मैं आपसे ये पूछूं, सर ये मेरा प्रपोजल है, आप प्लीज मेरे साथ कोलैबोरेट करें, आप मेरे में क्या चीज देखेंगे? दिल से, दिल वाली, ऑनेस्ट वाली बताइएगा कि वो चीज जो आप मेरे में देखेंगे जो आपको लगेगा हाँ यार ये स्मार्ट है और इसको जो है मैंने अगली बात सुननी है, या इसकी ईमेल का जवाब देना है, या इसके मैसेज का जवाब देना है. Sorry, you're muted, Faisal Saab. You need to unmute. जी, first and foremost, hunger. देखें, I get a message or sometimes more than one message every single day. Today, I've had about 5 sessions already, right? And these were with complete strangers. मैं किसी को नहीं जानता था उसमें से. ज़्यादातर जो है वो स्टार्टअप्स हैं. कोई किसी के रेफरेंस से कांटेक्ट कर लेता है, कोई डायरेक्टली जो है फेसबुक मैसेंजर पे एक मैसेज डाल देता है. मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक का जवाब दूं. मैं उनको एक ही सवाल पूछ लेता हूं कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप कौन सा मसला है जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, किसकी तकलीफ को आप दूर करना चाह रहे हैं, किसकी तकलीफ का आप अजाला करना चाह रहे हैं. अगर मुझे समझ में आती है, नॉर्मली आई स्पीक टू एवरी सिंगल वन ऑफ देम, 98-99% आई रिस्पॉन्ड, मेरी उनसे बात जरूर होती है. पहली चीज तो ये है कि उनका वो ही है कि पर्पस क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं और क्या मैं उसको
उसमें कोई मदद कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बाहर से, अमेरिका से या कहीं मिडल ईस्ट से किसी का मैसेज आता है कि जी मैं सोच रहा हूँ मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊँ, मेरे वालिदैन जो हैं ठीक है ना वो अब उस स्टेज में हैं कि जी मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारना चाहता हूँ। अब मैं वाशिंगटन का एक एग्जांपल देता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो 6-7 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, कुछ पैसे वगैरह उन्होंने जमा भी किए हैं, अमेजोन पे उन्होंने अपना एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया, वो भी सक्सेसफुल है। उन्होंने कहा कि मैं वापस आना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे वालिदैन जो हैं वो अकेले हैं, तो मैं क्या करूँ आके, मैं किस किस्म का बिजनेस करूँ। अब इट्स अ टफ क्वेश्चन टू आंसर, मैं किस किस्म का बिजनेस करूँ। तो फिर आप उसी से आप 4 सवाल और पूछते हैं उनसे कि अच्छा आप क्या करना चाह रहे हैं, आप कहाँ रहना चाह रहे हैं, अगर आप वालिदैन की वजह से वापस आ रहे हैं वो किस शहर में है। उन्होंने कहा जी आरिफ वाला में। तो फिर तो आपको आरिफ वाला ही जाना पड़ेगा ना, और आरिफ वाला का ही सोचना पड़ेगा कि मुझे वहीं से शुरू करना है। फिर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद का नहीं सोचेंगे, आप वहीं का छोटे जगह का सोचेंगे, बट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए कंपटीशन और कोलैबोरेशन की हम बात कर रहे हैं, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो वी विल सी मार्केट प्लेसेस, राइट। शालमी इज अ मार्केट प्लेस, वहां पर जितनी दुकानें हैं वो एक किस्म की दुकानें हैं कई। आजम क्लॉथ मार्केट, राइट, एशिया की बड़ी क्लॉथ मार्केट्स में उसका शुमार होता है। 100 साल से पुरानी वो एक मार्केट है, सब कपड़ा बेच रहे हैं, एक ही जगह से बेच रहे हैं। सो दे आर कोलैबोरेटिंग इन अ वे, दे आर ब्रिंगिंग ट्रैफिक इन टू आजम क्लॉथ मार्केट. When I go there as a customer, I might go to shop A, shop B, shop C, right? Depending on where I get better customer service. मुझे कौन बेहतर ट्रीट करता है, ठीक है ना, मैं उस हिसाब से जाऊंगा. कभी भी उमैर जस्ट मेंशन कि जी यू हैव टू टेक द प्लंज. आपको अगर आप लॉटरी का टिकट नहीं खरीदेंगे तो लॉटरी जीत नहीं सकते. तो ये तो आप सोचे ना कि मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है, ठीक है ना. बिल गेट्स को स्टीव जॉब्स ने खुद फोन किया था कि बिल यू नीड अस, राइट, सो आई नीड मनी, राइट, आई नीड कैपिटल to bring Apple back to where it was. And it is important for you to have Apple also as competition, right? Steve Jobs himself called Bill Gates. The two competitors who had been at rigorous competition for a long time. The market is big enough for both of them, right? Both of them are giants, right? Yes, Apple touched $1 trillion in valuation, but Microsoft is not that far behind. राइट. तो ये सारी चीजें हमें देख के वो चलनी चाहिए. किसी को कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, तो ये ज़हन में रखिएगा. नेचुरल हमारी इंक्लिनेशन है सर्वाइवल की. क्योंकि हमारी नेचुरल इंक्लिनेशन सर्वाइवल की है, तो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टिंक्ट जो है वो कंपटीशन का ही होता है. टू compete, टू सर्वाइव यू नीड टू compete एट टाइम्स, ठीक है ना. व्हेन यू आर आउट इन द जंगल, राइट, एंड यू आर अ प्रेडेटर, देयर आर अदर प्रेडेटर्स आल्सो. आपने भी शिकार करना है, उसने भी शिकार करना है, ठीक है ना. बट एट द सेम टाइम यू कोलैबोरेट इन द जंगल, राइट. तो ये सारी चीजें उस हिसाब से देखनी चाहिए कि किस चीज का किस वक्त क्या मकसद है. द सिचुएशन चेंजेस एंड योर इंक्लिनेशन चेंजेस. किसी ने मैसेज डाला था कि जी कोलैबोरेशन का बिगेस्ट एनिमी ईगो है. एब्सोल्युटली. लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसी ईगो को शेल्फ पे रख देते हैं और कहते हैं कि इस वक्त मेरी जरूरत जो है वो कोलैबोरेट करने की है, मैं इस वक्त जो है कम्पीट नहीं कर सकता, ठीक है ना. तो बेहतर होता है कि आप जो है फेवर्स पार्क करें. एक कल्चर है एस्किमोस का, वो क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो बड़ा हॉस्टाइल, तो जब ट्रैवल करते हैं वो एक्स्ट्रा खाना लेकर ट्रैवल करते हैं, एक्स्ट्रा खाना, और उसको जगह जगह वो दफन करते जाते हैं और वहां मार्कर लगाते जाते हैं. और उसका कॉन्सेप्ट यही है कि कल अगर मैं भटक गया उस विल्डरनेस में और मेरे पास खाने को ना हुआ तो मुझे कोई ना कोई बरीड फूड मिलेगा, जो जरूरी नहीं है कि मैंने ही दबाया हो, किसी और ने दबाया होगा. तो ये सोच के चलें कि आपने ये चीजें जो हैं ये इक्विटी है आपकी, ये भी इक्विटी है जो आप फेवर्स पार्क करते हैं थ्रू योर जर्नी. और कोई भी स्टार्टअप जो है उसकी जर्नी में बहुत से इंस्टेंसेस आते हैं जब वो फेवर करता है किसी और को. वी हैव सीन दैट इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम कि लोग कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है ना. वो एक ही जगह पे बैठे हों, वो एक इंक्यूबेटर में हो या मल्टीपल जगहों पे हो, वो कोलैबोरेट करते हैं बिकॉज देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू कोलैबोरेट, देयर इज अ कंपल्शन टू कोलैबोरेट.
राइट। तो ये कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है कोलैबोरेट करना, और जो कोलैबोरेशन आराम से करते हैं और सही नीयत से करते हैं उनकी सक्सेस भी ज्यादा होती है। तो नीयत का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जो हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं ना, तो उसको नीयत के लफ्ज में भी हम उसके पैराए में भी देख सकते हैं कि मेरी नीयत क्या है। मैं जब किसी के साथ कोलैबोरेट करने जा रहा हूँ, क्या मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि मेरी जेब भरी, या मैं इसलिए जा रहा हूँ कि हम दोनों का फायदा होगा। तो जो विन विन हम कहते हैं, कंपटीशन को भी उसी पैराए से देखना चाहिए। उबर और करीम का मेंशन किया साथ में, यस दे वर कंपीटिंग बट दे डेवलप द मार्केट। इस वक्त जो है, अगर आपने देखा हो तो तकरीबन को 8-10 जो है ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज शुरू हुई है, बिकॉज एक रिक्वायरमेंट थी कोविड की वजह से कि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, शॉपिंग करने के लिए नहीं निकल रहे थे, जो रोजमर्रा की चीजें चाहिए थी उसके लिए नहीं निकल रहे थे। तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई और बहुत सी कंपनियां आ गई, बहुत सा पैसा भी आया उन कंपनियों के पीछे। दे विल डेवलप द मार्केट, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होगा, कंज्यूमर जो है वो ज्यादा जो है इस तरह माइल होगा, तो सबका फायदा होगा, मार्केट की डेवलपमेंट होगी। तो ये सारी चीजें इस ज़हन में रख के चलें। Great. No, some very, very useful points, Fansab, and I've taken down two, which is hunger or what problem are we trying to solve. I really like this question, Umair. We're going to take it. Faraz, we're going to answer this question because we get heard about this a lot. Saad, very quickly, what would be one or two things that you look in startups when they are pitching you to collaborate? Sure, and I'll go quick on this. So ये एक चीज़ है जिस पे like I've thought a lot, reflected a lot in the past maybe 5 years, and I think one of the things is like जिसको मैं top पे rate करता हूँ, that is taming the ego. So अपनी ego को जो है ना tame करना is a very very useful skill that I've seen in founders. It's not something that comes inborn. बहुत ही रेयर होगा कि आप पाकिस्तान में किसी से मिलें who knows how to tame their ego, but you can actually help them, coach them, mentor them, do this कि अपनी ईगो को कैसे जो है ना कंट्रोल करना है और अपनी ईगो को कैसे रिकग्नाइज करना है, स्पेशली बिकॉज आई डू कम्युनिटी मैनेजमेंट एट स्केल विद 5 कंट्रीज, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान। तो उसमें जब कम्युनिटी मैनेजर्स के साथ मैं कॉन्फ्लिक्ट्स पे बात करता हूँ, आई यूजुअली हैव अ कॉन्फ्लिक्ट दैट आई मैनेज एवरी डे, एंड आई एम मैनेजिंग रिमोट कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब ये बंदे मेरे सामने नहीं है, वो ऑनलाइन आएंगे, कहेंगे हमारा ये मसला हो गया। तो माई जॉब इज टू हेल्प देम अंडरस्टैंड what part of this conflict is caused by their own ego without offending them. And that's something I realized with time, like how to talk to someone to make them understand कि यार ये basically block आपके ego ने create किया हुआ है. If you are able to look past this, humans have an ability where they can see through their ego. If they are able to do that, they're successful, and you can go and see this in anyone's life journey as well. So ये एक skill है जो मैंने देखी है कि if these young people are able to tame their ego, या उनको समझ आता है कि अपनी ईगो को मैं कैसे भुला भुसला के रख लूं, तो वो जो है ना they are ready to grow. And I've worked with such founders. I have amazing success stories of people जिन्होंने ये किया है. The second one is understanding the difference between opportunity या वो जो hunger है versus courage. So बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे कि जी अच्छा मुझे दे दें आप प्लीज, जो है ना मुझे जॉब दे दें, या मुझे कोई कंपनी दे दें, या मैं कोलैबोरेट कर लें. Then there are sort of people who have the courage to do that, like they are super hungry in terms of coming out and saying कि वो ये नहीं आपसे पूछेंगे कि कोलैबोरेट कर लें, वो कहेंगे कि जी मैंने कोलैबोरेट करना है. So it's showing the difference between something that they want versus something that they're ready to put all their force behind. So ये जो opportunity versus courage है, ये एक और चीज मैंने realize की है कि जब भी आप कि कोई यंग बच्चा आपके पास आता है, आप देखते हैं कि ये आपसे चीज मांग रहा है या आपसे चीज कह रहा है. आई लव पीपल हु डोमिनेट, somebody who comes in and says सर ये जो है ना ये प्लीज कर दें. That's the sort of hunger I want to see, and there are people who do that. और कुछ जो नहीं, obviously कुछ लोग जो नहीं वो ये ability होती है जिनकी, आप उनको सिखाते हैं. I've seen introverts convert into people who would come in and say कि जी ये करना है, ये मुझे चाहिए. And that's the sort of people we look in, because we get pitched by a lot of people. जिस तरह फैसल कह रहे थे, we get pitched by a lot of people. So who do we listen to? Do we listen to someone जो हमें WhatsApp करके कहेगा कि सर प्लीज
देख लें, या जो कहेगा सर प्लीज आपने जवाब नहीं दिया 10वीं दफा चेज करेगा और कहेगा सर प्लीज जवाब दे दें. So those two skills I think would Saad, really I was help. Yeah. laughing throughout because I could so relate to you and what you were saying in terms of execution. पहली बात तो ये कि भाई करेज तो वही होगा ना जो छलांग लगा भी लेगा स्विमिंग पूल में, और डूब गया नहीं तो दो चार हाथ पैर मार के कहीं ना कहीं आपको स्विमिंग का लेसन लर्न करना आ ही जाएगा. And I want to frame this for Shahida because I want to take her comments on this very quickly. Shahida, products and services and our ideas are not always perfect. और सबसे बुरी चीज जो एक कोलैबोरेशन में हमें लगती है, वो अगला बंदा आप ही की तरह का प्रोडक्ट है बट थोड़ी सी उसकी यूएसपी फर्क है, बट वो आपसे कह देगा नहीं यार तुम्हारी चीज खराब है और मेरी चीज बड़ी अच्छी है, और उधर ही हम कहते हैं आग लगा दो, इससे कभी दोबारा बात नहीं करनी और हमने इसके पास दोबारा नहीं जाना टू आस्क हिम एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. What would be your 2 cents on curbing this behavior and then looking towards collaboration and asking people कि हाँ भाई ठीक है हमने करना है ये, let's go ahead and do it. So I think I'm a little different from all of the other panelists, and maybe a bit harsher. To me, first of all, I'm a great believer in semantics. Words have meaning. Asking for help and asking for a collaboration are two different things. It's not the same thing. आपको मेरी मदद चाहिए, मैं हमेशा हाजिर हूँ. ठीक है? As a mentor, as a senior, anybody that asks me for help, I try to go out of my way and help. But if you're asking for a collaboration, I think Shireen Appa के words पे हमें वापस जाना ही है, and the word is win-win. ठीक है? ये गलत फहमी है कि स्टार्टअप सिर्फ लेने आते हैं. अभी तक जितनी बातें हुई है ना, the startup is like a small child, बड़ों के पास जाके अम्मी मुझे कुछ दे दो, आपा मुझे कुछ दे दो, मेरी मदद कर लो. I am not of that philosophy. I think startups have a lot to offer. I don't look at a startup as a मेरे से छोटा या मुझसे वो. I look at the value of their offering. What is in it for me as a company, as an organization? All of the collaborations we have done that have been successful are where somebody is able to walk in and say, okay, we know what you do. We know what you are looking for, what your priorities are. This is how our product, service, etc. align with your priorities. This is how we would like to work together. And they have all the details ironed out. They've done their homework. Somebody who comes into me and says, शाहिदा जी मुझे प्लीज आप जो है ना मेरी मदद कर लें या आप मेरे लिए ये कर दें, मैं कहूँगी बेटा no problem, I do mentorship all the time. I'll be happy to mentor you. But that's not a collaboration. That's not a collaboration. And I think it's important to separate these two things out. Okay? And I'll give you an example of a successful collaboration from when I started out. I was a nobody, and this is 20 years ago now. And I went to the MD of Unilever. And I was able to convince Unilever to partner with me. Actually partner with me, financially partner with me. And they didn't do that because I was a startup. They did it because they saw an opportunity for their business. And जब हम ये बात कर रहे होते हैं ना, अभी आपने जो सवाल पूछा कि भी दो प्रोडक्ट्स हैं, एक की यूएसपी थोड़ी सी बेहतर है, एक की शायद इतनी बेहतर नहीं है, मेरा सवाल हमेशा वापस उसी पे जाता है, आप करना क्या चाह रहे हैं? अगर आप एक कंपनी बनाना चाह रहे हैं जिसकी मार्केट, यू वांट टू कंट्रोल द मार्केट, ठीक है? अगर मैं उस मार्केट को कंट्रोल करना चाह रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है मेरा प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट, मैं ये देखूंगी इन दोनों को मिला के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट क्या बन सकता, राइट? मैं ये देखूंगी सबसे सस्ता, सबसे अच्छी क्वालिटी, सबसे ज्यादा मार्केट रीच कैसे हो सकती. दैट इज बिजनेस लैंग्वेज. I think we are too caught up
with all due deference to everybody, business is not about feelings. Business is about the bottom line. Business is about मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, मेरा मार्केट सबसे बड़ा है, मेरे ऑफरिंग जो है चाहे सर्विस है या चाहे प्रोडक्ट है, इट इज समथिंग दैट इज इन डिमांड. इसकी एक जरूरत है, लोग इसके लिए पैसे देने पे तैयार हैं. दैट इज बिजनेस. वेदर यू आर इन द क्रिएटिव बिजनेस, ठीक है, आप आर्ट्स का काम कर रहे हैं, आप म्यूजिक का काम कर रहे हैं, आप कोई भी चीज बना रहे हैं, जब तक कोई उस सर्विस को या उस काम को खरीदने पे तैयार नहीं है, इट इज नॉट ए बिजनेस. राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब हम कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, a collaboration is in essence a partnership between two organizations. और ये दोनों को फायदा पहुंचना चाहिए, फायदा पहुंचना चाहिए, ठीक है, और ये दोनों को कुछ मिलना चाहिए, not just one side. Right? If I am a startup and I go, I say कि मुझे आप ये कर दें, you're asking for help, you're not asking for a collaboration. As a startup, I have to be able to offer something. कि भाई मेरा ये काम है, suppose I'm doing graphic design, मैं आपके लिए जो है आपकी ग्राफिक डिजाइन या ब्रांडिंग कैंपेन बना सकती हूँ और बाकी सबसे सस्ता बनाऊंगी, बाकी सबसे अच्छा बनाऊंगी और आपको 1, 2, 3 फायदे मिलेंगे. उनका फायदा प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है. So I'll end there. I'm almost looking at the clock and I'm thinking that there's such nice thoughts that are coming across. But I'll quickly like to recap for those of the audience members who are actually hearing us and they want to like note down these points because मेरे ख्याल से तो ये notepad और पेन वाला इलाका है कि हम इस पे सारा कुछ लिखते जाएं और करते रहें. So I think a couple of things that are a must for collaboration. For those of you who are listening, hunger. What problem are you trying to solve? Are you ready to tame the ego? Are you also realizing the opportunity versus courage? Do you have what it takes to actually take the plunge as well? Uh, don't crib around the bush. Just make sure that you let the other person know as well कि ये विन विन है या विन लूज है या लूज लूज है. अगर दूसरे का भी फायदा है इसमें तो it's gonna help you in collaboration. Be a little bit also I wouldn't say selfish, but also see that what's in it for me, and it should be from both the parties. You should both see that is it actually helping us develop a newer product that has a better offering, and are we able to control the market for that as well. So thank you so much all of you for these pointers. There are a couple of questions. Umair, if we could flash the first one from Farhat Asif. She wanted to ask that why the senior mentors or people who are privileged enough to, of course, create a class of their own professional status feel threatened from young, aspiring people. Is that happening in the industry? Before we take this question, Farad, let me tell you one thing that from my side that I would want to say. You're attending this session and being a part of this webinar. You have already made interactions with all 6 of us. And I would let Umair answer this. Umair, is this a reality or is this a perception? Is there really some kind of a rift why senior mentors are not taking out time to aspire the young people? I think it's both ways. Both carry a lot of judgments about the other. There's a lot of lack of dialogue in our society. So I'm just going to emphasize one thing here, that the dialogue is an ongoing process, and the intention of dialogue is not to get to an outcome. It is to understand the other better. And the more we do it, the young and the old, the more you go out and do it with your stakeholders. I've done it as a young person. I'm 34. I'm very well connected across different sectors and all kinds of people, very, very well experienced. And I came in knowing
very little, and I got a whole lot. And I got a whole lot. People like Faisal Sherjan, Shahida Saleem, whoever I have come across, and they've all been. And Shahida is not the oldie, but Faisal Saab, I'd classify you as a little oldie kind if you'd allow me on the gender privilege here. But I must say that I've seen a lot of hair, a lot of shafqat from the oldies around, great mentors in this country, and they all have had the time. They were always willing to give the time, and it's only about the things that we just heard. अगर आप वो लेके जाते हैं तो मेरा ख्याल है आप बहुत बैरियर्स ब्रेक करते हैं, और आपको होना चाहिए ऐसा जो कि ये बैरियर्स ब्रेक करे. मेरी माँ ने ऐसी सुने ही नहीं एडवाइस. मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था ये नहीं करो, ये ऐसे नहीं. मैंने तो मुझे जो किया तो हो गया, या चले वैसे नहीं हुआ, किसी मुख्तलिफ अंदाज में हो गया होगा, लेकिन रास्ता तो बन गया. मेरे लिए भी बना, बहुत सारे औरों के लिए भी बना. एंड आई थिंक दैट्स द स्पिरिट ऑफ पायनियरिंग इट, राइट? सो हाउ मेनी, आई वुड आस्क दिस क्वेश्चन कि आपने कितनों को ट्राई किया है, आपने कितनों से इस तरह एक्सपीरियंस किया है? मैंने तो नहीं किया, और अगर किया है तो मैंने उसको हमेशा अपनी मुझे लगा कि मेरे अंदर कोई चैलेंज है, मैं नहीं समझता, मुझे बेहतर करने की ज़रूरत है, गेम किसी और तरीके से जाने की ज़रूरत है. इट ऑलवेज वर्कड आउट. And इसमें एक और डिमेंशन है. ये सीनियर जूनियर का जो है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है ये आउटडेटेड है. इट इज अबाउट हु ब्रिंग्स व्हाट वैल्यू, हु हैज व्हाट एक्सपीरियंस, हु हैज व्हाट एक्सपर्टीज इन विच एरिया. क्योंकि मेरा मीडिया से काफी ताल्लुक रहा है, तो मैं हमेशा, मुझे प्रॉब्लम रही सीनियर तज्जियाकार, जूनियर तज्जियाकार. और भाई तज्जियाकार होता है, एनालिस्ट होता है, उसमें कोई एज का फैक्टर नहीं होता. अगर हम सिर्फ एज को एक फैक्टर बना लें तो बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज बन जाती है. इट्स अबाउट व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, इट्स हाउ यू इंटरैक्ट विद पीपल. नॉर्मली वी नेवर से कि तुमने क्या कहा, क्योंकि तुमने जिस तरह कहा है वो गलत है. द टोन ऑफ व्हाट यू सेड, द मैनर इन विच यू सेड इट, राइट? ये सारी चीजें हैं. I have been involved with the startup ecosystem now for almost 6 years, right? And we've had all kinds of mentors, and not all of them were gray-haired. In fact, you now need younger mentors, because data also says people listen to people who are closer to their own age. Yeah. Because you have the feeling that अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, right? If I look at just somebody who's gray-haired and 65 plus, right? So Jack Ma says past 60, you should be working for younger people. They shouldn't be working for you. You should be working for them, right? Because they're the ones who are going to drive the future. तो इसमें ये जो है ना, ये जूनियर सीनियर का हमें जो है ये अब साइड पे रख देना चाहिए, और होना ये चाहिए कि जो वैल्यू ला सकता है किसी भी चीज में, किसी भी सब्जेक्ट में, उस वैल्यू को देखना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन देखनी चाहिए. ये सारी चीजें जो हैं अब इसको रीथिंक करने की जरूरत है. दुनिया इतनी कनेक्टेड है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा है, जो 20 साल में आप सीखते थे अब आप 20 हफ्तों में सीखते हैं. तो उस हिसाब से इसको चीज को देखना चाहिए. और एक्सपीरियंस की भी जो कहानी होती है, अगर मैंने एक ही चीज की है 20 साल के लिए बार बार, तो मेरा क्या 20 साल का एक्सपीरियंस है, अनलेस मैंने 20 चीजें ना एक्सपीरियंस की हो उन 20 सालों में, राइट? तो ये इस हिसाब से इसको देखना चाहिए. Yeah, and absolutely, and for all of us here, Faisal Saab, Umair, Saad, Shahida, the learning curve has never stopped. No matter at what stage you are at. अगर आज आप एक junior, Farad, if you're coming from that perspective that you're young, you're fresh in the field, you want to explore, know that all of us have also gone through the same process. और अभी भी अगर इस लेवल पे भी है, so the learning is still carrying on, and that is why वो जो आप अपनी एक professional development करते रहते हैं, वो आपकी learning को improve, enhance करती रहती है. Saad, I would want your comments on this as well. You're a young mentor, and I would want to hear from you. How is your experience been like? Sure. Have you felt this kind of threatening behavior coming from the senior mentors? I mean, I think what Umair said and what Faisal said, just to summarize some parts of it that I resonate with a lot. Umair की तरह मुझे भी अभी I've crossed the 30 का barrier almost 2 years back. I'm just 32 now, and एक time था जब मैं अपने आप को young कहता था, pre-30,
एंड उस टाइम पे वही पॉइंट था कि आई यूज्ड टू रीच आउट टू पीपल, आई हैव डन कोलैबोरेशंस विद nearly everyone in the industry, especially in the tech industry, and जो आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करता था, आई जस्ट यूज्ड टू गो एंड नॉक द नेक्स्ट डोर, बिकॉज एट दैट टाइम आई कैन जस्ट रिमेन हंग ओवर वन पर्सन कि यार अच्छा इसने मुझे इस तरह क्यों जवाब दे दिया, या इसने मुझे इस तरह क्यों कह दिया. इस तरह के बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं. कुछ हैं सीनियर्स, कुछ इस तरह के जूनियर्स भी हैं जिनका वही मसला है, दे डोंट नो हाउ टू टेम देयर ईगो. तो उनको ये नहीं समझ आता कि यार ये एक बंदा मेरा एक्चुअली फायदा कर सकता है इंस्टेड के, तो मैं इससे कोलैबोरेट करता हूँ. वन एग्जांपल आई गिव यू ऑफ दिस ब्रिलियंट जेंटलमैन, आई एम मोर बाइस्ड टुवर्ड्स हिम because I've been under his mentorship, is Parvez Saab from the NIC Islamabad. I have seen that person interact with every single age group that I can think of. I've seen Parvez Saab interact with 10-year-olds. I've seen Parvez Saab interact with 18, 90-year-olds. And he has an amazing ambit, something that I've learned from him. Okay, if you are able to, see past the opportunity, जिस तरह वो कहते हैं ना, let's team up. I think that should be the mantra of Pakistan, to let's collaborate, let's team up, because हर जो यंग बच्चा है उसकी एक वो नहीं देख रहा होता कि यार कोलैबोरेशन करने से क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी. इसी तरह जो ओल्डर लोग हैं उनका भी यही चैलेंज होता है कि उनको नजर नहीं आ रहा होता कि यार इफ आई एम एबल टू कोलैबोरेट, दीज आर द थिंग्स दैट कैन ओपन अप. सो एडवाइस यही है कि उस तरह के लोग जो आपको रिस्पॉन्ड आगे से नहीं करते, knock the door, you don't get a response, move on to the next one, because at young people you have the biggest opportunity, that is time. So jitni jaldi you will move on to the next door, you maybe need to try 100 doors to get to your first 10 collaborations. So please just don't keep waiting on those who do not respond nicely. There are a lot of their people who do not respond nicely for whatever reasons. But just try to do this very fast, and you will get good response. I've gotten very good response, I still do, again thanks to everyone who has collaborated and who I'll be collaborating with going forward. So yeah, that's my short take on this. No, and rightly said, Saad, that कुछ ऐसे आपको लोग नजर आएंगे जो वाकई आपके अंदर वो स्पार्क देखेंगे, but provided you are ready to show them the spark that you have. I think one more thing that I would add to the list, something that has worked for me when I have collaborated with bigger names, like Saad was saying, was I did my homework with the person that I wanted to collaborate with. And I did my homework, I did my research, and I penned down on a piece of paper where do my advantages lie and where I see a gap in their existing processes. और वो जो राइट फिट एक पजल की पीस की तरह, मैंने उनसे कहा कि ये आपका पजल का पीस है जो मिसिंग है, जो कि सिर्फ मेरे पास है. And that is when you go ahead and that is when you execute. So do the homework और राइट बंदों के साथ कोलैबोरेट करना बहुत जरूरी है. Lady and gentlemen, we are running out of time, so I would want, this has been a very fruitful session, but I would want your final thoughts. 1 minute each of you, if you could. I'll start with Shahida. 1 minute, if there was one advice that we would want to give to fresh starters who want to collaborate with other businesses, bigger businesses, smaller businesses, what would you say to them? Sorry, Umair, we are going with Shahida first. Okay. So definitely collaboration is required. It's the way of the future. I would say think smart collaboration. And so the same way we talk about smart planning, be specific, make sure you can measure the outcomes of the collaboration. Be very clear in your objectives for the collaboration. Think win-win. What do both parties or all parties get out of this collaboration? And I think that the identification of ensuring trust is really important. But trust doesn't happen naturally. So you start off by ensuring that you have things very clear, they're written down, everybody has something that you can refer to, and that helps to build trust. And trust is really the backbone.
So I would encourage everybody. I'd also like to put out here for all of those. I am an oldie, but I am available. I'm happy to help if anybody wants some help. And if you want to collaborate, then let me know what you're interested in collaborating as well. Great, fantastic. Faisal sir, final words of advice. You're muted, Faisal sir. G. Final advice is play the game for the love of the game, right? Win or lose are conditions, right? That's the result, the consequence. But don't play the game just because you want to win and you want somebody else to lose. Play it for the love of the game. Those who play it for the love of the game play it for longer. They stay longer, right? Failure doesn't mean anything to them. They can bounce back from failure because they love the game, right? So think of it in that way. Even though during childhood, when we start to compete in sports, it's all about, we're being told to win. But just do it for being part of the competition also, right? So be there. And then you will develop this sense of collaboration. You will develop that ability to manage your own ego so that everything doesn't become a competition that you have to win. There are opportunities that come along जिसमें दूसरों का भी जो है फायदा होगा लेकिन आपका जरूर फायदा होगा तो वो आपको जरूर लेके चलना है कि आपने समझना है कि मैंने उन कंडीशंस में कोलैबोरेट करना है लोगों के साथ मिलके काम करना है उनके साथ मिलके एक चीज डेवलप करनी है जिसमें उनका भी फायदा हो मेरा भी फायदा हो Great. Very, very nicely said, Faisal sir. I'm taking down these points. We'll do a quick roundup. Saad? Yeah, so I think the advice is simple कि थोड़ा सा सोच लें कि आगे क्या करना है. Try to have a vision. Short-term thinking is something that I've seen is a very, very big challenge in young people in Pakistan. तो ये नहीं देखते कि जी अच्छा इस चीज़ को मैं अभी तो किसी को ना कर रहा हूँ लेकिन कल उसी बंदे से जाके फिर मुझे वो चीज़ मांगनी पड़ेगी एंड दैट्स अ वेरी मेजर थिंग दैट आई हैव सीन यू नो विद यंगस्टर्स के वो अभी तो अपनी जो है ना ईगो को टेम नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है यार मैं क्यों जाके कोलैबोरेट करूँ फिर कल जाके उसी बंदे से जब आपको मांगना पड़ता है वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल यू विल कम फुल सर्कल आई हैव सीन दिस विद पीपल आई हैव एक्चुअली सेड दिस टू पीपल कि आज आप ये कर रहे हैं जो कि चीज़ सही नहीं है the next day you're going to come to me with the same query and it's just going to be embarrassing because you're turning me down today and that has happened with people and then again I think so it's about just understanding कि अपनी चीज़ों को देख लें try to see के what are the try to look for opportunities around you and try to do not shut down your doors do not जो है ना वो burn the bridges जो again एक बहुत बड़ा challenge है जो मैंने देखा है कि एक बस की लड़ाई होगी कुछ हो गया तो बस ब्रिज बर्न कर दिया फिर कल परसों पता चलता है उसी से काम करना है क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत छोटा सा है खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने इमिग्रेशन करके नहीं जाना बाहर तो यू नो इट्स जस्ट लिटरली गोइंग टू टॉक टू 5 या 10 लोग हैं इस इंडस्ट्री में जिससे आप जिनके साथ आपने काम करना है सो प्लीज ये सब बात कराची में आप बहुत 2 नंबरी करके सरवाइव कर सकते हैं कराची बहुत क्या कह रही है फाइनल थॉट मैंने पुराने वाले के लिए ख्याल तभी मैंने हाथ रेज किया था फॉर मी यू आर फेल इफ यू ब्रिंग एन आइडिया इफ यू डोंट हैव दिस फेल से मुराद फ्लेक्सिबिलिटी कोलैबोरेशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है इनिशियल स्टांस पे जो आप सोच के गए होते हैं इट रेयरली वर्क्स आउट दैट वे यू हैव टू ओपन अप यू हैव टू ट्वीक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है जिसको आपने होमवर्क से बैक किया मैंने सेल्फ अवेयरनेस से कहा फैसल साहब ने मार्केट और ऑब्जेक्टिव से रिलेट किया बहुत ज़रूरी है कि आपकी बात उस वक्त जो आप बात प्रेजेंट कर रहे हैं जो मुद्दा प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर आपकी रिसर्च हो इट हैज़ एन ऑब्जेक्टिव आई में इंटेंशन niyat makes a big difference. I think there's a different energy that you carry when you have that positive intent, when you're really being collaborative. And L is love for the idea itself. If it matters to you, you will sell it better. It will come out better without much of the drama. Why be collaborative? Don't waste your time reinventing the wheel. Your time is precious. क्यों ऐसा काम कर रहे हैं जो कोई और कर रहा है बेहतर कर रहा है
मुसलसल कर रहा है और आप उससे लेके उस पर अपना पीस ऐड कर सकते हैं, अपनी डिस्टिंक्शन पहचाने, ताकि आप उस बड़ी चेन में मेंबर बन सकें। एक होशियार ना बने कि डोमिनेट तो सब आपका। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में किसी स्टार्टअप में इतना तपड़ है इस वक्त, और हमारा इकोसिस्टम इस तरह की कोई रीच अलाउ करता है। हमारा इकोसिस्टम कोलैबोरेशन मांगता है और बहुत सारे लोगों की सपोर्ट मांगता है कि कुछ खड़ा हो सके, एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन विद इवन द मार्केट प्लेसेस दैट हैव वर्कड आउट। Number two, don't do what you don't love doing. Your life is precious, your time is precious. As an organization, you will only do what you love doing in a good way. You will excel at it, you will work at it, you will do better without other people forcing you into it. So collaboration allows you to take out what, the pieces that you don't like doing, so you retain what is your distinction. Come to that. And number three, don't be fetish about the size. Don't be fetish. I've been that as a young entrepreneur. हम यहाँ भी हैं, मैं ख्वाब देखा था SOL पूरे पाकिस्तान में होगा। मुझे लगता है वो fetish होने की कोई ज़रूरत नहीं है आज के दौर में. You don't have to be physically there to be there. You don't need to have 100 people team to say you're a big organization. Be big in impact. Be big in your thinking, be big in your execution. So collaboration allows for that. Otherwise तो आप बहुत अकेले हैं. आपके पास अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो फिर तो आप जिंदगी लगाएंगे, कभी पहुंच पाएंगे, शायद एक घर बना पाएं. अगर आपने स्पीड लगानी है, तेज बनाना है, तो यकीनन आपको हर लेवल पे कोलैबोरेशन चाहिए. इस दरमियान कंपटीशन है, और जब कंपटीशन करें तो अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह करें, गेम के उसूल समझ के करें और आखिर में ज़रूर हाथ मिलाएं ताकि वो ना जलाएं जो साथ कह रहे हैं. थैंक यू. Oh, thank you so much. That brings us officially to the end of the webinar. We hope that this has been really, really fruitful for all of you. Please do share your feedback. Your questions have been coming in, so thank you so much for that. और सवालात से और कमेंट से हमें ये पता चलता रहा कि आप लोग सारे इंटरेस्टेड थे और सुन रहे थे. For those of you who have been unable to listen to this webinar, the recording is going to be available on our social media channels as well. Thank you so much, everybody. Shiri Appa unfortunately had to leave. She had another commitment in the middle, but she sends her regards, and she said that it was a delight for her to be here as well. Thank you, Faisal Saab, Saad, Shaila, for joining in. Umair, thank you so much for this particular session. एक आखिर में हाथ मिला लें कोरोना के बाद, जब भी पाले, बेशक जो भी करना है आपने वो भी कर ले. Make sure that whatever you do it with the right objective and the right intent, and then your paths will be smooth, hopefully, inshallah. Thank you so much, everybody. If we can all just unmute our mic and say a big bye bye to all of our audience who have been joining us and listening to the session. Bye, everyone. Bye bye. Take care. Thank you.